Hello dear learners, here I am with the rules on articles. Now we are going to learn the indefinite articles a/an first. The very first rule says we use a/an with the common profession of a person. जब कभी भी आप किसी कॉमन प्रोफेशन की बात करते हैं जो एक साथ कई लोगों के पास हो, हम ए और एन का यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अ डॉक्टर, a manager, an engineer, and an inspector. Second rule says whenever we talk of the singular count noun, एक वचन संज्ञा की बात करते हैं तो आप ए और एन का यूज करते हैं, जैसे a pen, a book, a table. Rule number 3 says whenever we get to have the Hindi meaning कोई एक, जब कभी भी हिंदी के सेंटेंस में मीनिंग कोई एक आता है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हम कोई एक को हटाकर उसकी जगह a/n का यूज करते हैं. Now here you can have the example. Can you give me a pen, or may I sit on a bench? Now here you can see rule number 4. When any exclamatory sentence begins with what, we use a/n. जब कभी भी कोई विस्मयबोधक वाक्य what से शुरू होता है और उसके लास्ट में exclamation sign होता है, तब हम बीच में a/n का यूज करते हैं, जैसे कि लिखा हो व्हाट एन आइडिया सर जी एंड व्हाट अ शॉट. नाउ लेट्स गेट ऑन टू द रूल नंबर 5. वी यूज आर्टिकल a with some determiners such as few, little, lot of, plenty of, great deal of, etc. Now here you have got some examples given. A few books, a little knowledge, a lot of water, a plenty of stars. Now here you have got certain note given to you, and it's very important for the learners to know that we use few with plural count noun. ध्यान रखिए कि हम few का यूज plural count noun के साथ में करते हैं, और count noun का मतलब वो होता है जिसे आप नंबर्स में गिन सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 like that. एंड लिटिल का यूज आप मेनली अनकाउंट नाउन के लिए करते हैं, जैसे कि लिटिल वाटर, लिटिल नॉलेज, लिटिल मनी लाइक दैट. लॉट ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है बहुत अधिक, जैसे वी हैव अ लॉट ऑफ बुक्स इन आवर कॉलेज लाइब्रेरी एंड देयर आर अ लॉट ऑफ गुड प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया. एंड प्लेंटी ऑफ का मीनिंग होता है हद से अधिक. व्हेनेवर सर्टेन नाउन्स आर प्रेजेंट इन सच अ ह्यूज क्वांटिटी दैट is very difficult to be counted, we use plenty of in that particular case. So we can say there are plenty of stars in the sky and there is plenty of water in the ocean. Now here comes the rule number 6, which is the combination of 5 different rules, which says whenever we talk about the single unit of time, ratio, money, speed and weight, we mainly use a/n in the sentence. Now here you come with the examples. इस वाक्यों में करते हैं, जैसे कि यहाँ पे examples में दिया हुआ wait a minute, 1 मिनट रुकिए, तो यहाँ पे टाइम के सापेक्ष बात हुई है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज I take 6 classes a day. मैं एक दिन में 6 क्लासेस लेता हूँ. So 12 classes in 2 days, 18 classes in 3 days, like that. नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट के लिए I have a 100 rupee note. मेरे पास 100 रुपए का नोट है. नेक्स्ट इज माई बाइक रन्स 40 किलोमीटर्स इन एन आवर. मेरी गाड़ी 40 किलोमीटर्स चलती है 1 घंटे में, मतलब उसकी रफ्तार बता रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड. एंड गिव मी अ किलोग्राम ऑफ शुगर. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट. मुझे 1 किलो शक्कर के दीजिए. सो व्हेनेवर वी टॉक ऑफ एनी सिंगुलर count object, then we get to use a/n in the sentence. So here we complete the rules of using a/n in the sentences. If you have any query, we'll get to have it sorted out in our next section. Now we are moving for the next rule, that is definite article the. We have already learned that definite article the is used mainly with definite nouns. So here we go with the example. The very first one says before the names of the planet like the sun, the moon, the Mars, the earth likewise.
we use the. Second rule says before the names of rivers which are big and holy and which are there in the map also, like the Ganges, the Yamuna, the Narmada, Nile, the Godavari, the Kaveri, the Krishna, the Brahmaputra, like that. Rule number 3 says before the names of holy books, पवित्र धार्मिक ग्रंथों के नामों के पहले. Now the examples are the Gita, the Quran, the Bible, the Guru Granth Sahib, the Ramayana, likewise. Rule number 4 says before the names of room objects which appear to be the same. कमरे में उपस्थित चीजें आप चारों तरफ देखिए जो आपको देखने में एक जैसी लग रही हैं और एक से ज्यादा है, उन सभी के पहले आप द का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल द लाइट्स, द वॉल्स, द फ्लोर्स, the carpets, the curtains, etc. Rule number 5 says before the names of scientific inventions like the computers and the radios, वैज्ञानिक आविष्कारों के नामों के पहले जैसे कि कंप्यूटर और रेडियो, इनके पहले द का यूज करेंगे. एंड द रूल नंबर 6 एंड द लास्ट रूल सेज बिफोर आवर बॉडी पार्ट्स, हमारे शरीर के अंगों के नामों के पहले जैसे द हेड, द हैंड्स, द माउथ, द लेग्स, etc. Okay, now let's move on to the next slide. We use definite article the before the ordinal numbers. Now here you have got the examples, the first, the second, the third, the fourth, the fifth, likewise. Rule number 8 says before the post which can be assigned to one person at a time, ऐसे पदों के नामों के पहले जो कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति को मिले. For example, the Prime Minister, the CEO, the Principal, the Director, likewise. Rule number 9 says before the names of the places which can be one at a time in a city, ऐसी जगह जो एक शहर में मुख्य प्राय एक ही हो सकती हैं जैसे the town hall, the railway station, the airport, etc. Rule number 10 says before the names of political parties, primarily we are talking about the national parties like the BJP, the Congress, the RJD, the CPM, the Shiv Sena. Rule number 11 says before the names of world wars which caused the huge death toll, for example the Kargil, the Civil War, the Mahabharat, the America-Iraq War, etc. Next, the next rule says before the names of seas and ocean, सागरों और महासागरों के नामों के पहले. Here you have got the examples given to you, the Red Sea, the Indian Ocean, the Arabian Sea, the Pacific Ocean. Now next rule says before the names of natural calamities such as the flood, the tsunami, the earthquake, the drought, the volcanoes. Now we'll move on to the next slide which has got the rule from 14 to 20. The rule number 14 says before the names of religious groups such as the Hindus, the Muslims, the Christians, we use the. Rule number 15 says before the names of deadly diseases such as the anthrax, the flu, the malaria, the corona, likewise. Rule number 16 says before the names of directions, the east, the west, the north, the south. Rule number 17 says before the names of historical buildings, ऐतिहासिक इमारतों के नामों के पहले such as the Taj, the Red Fort, the Qutub Minar, we use the. Next, rule number 18 says before the names of international organizations such as WTO, WHO, Red Cross, we use the before them. Rule number 19 says before the names of the noun to show the possession like the bag is equal to my bag, the book is equal to my book, the car is equal to my car. And the last rule says before the names of animal species such as the tiger, the lion, the cow. Now we'll move on to the next lesson, that is lesson number 4 that you are going to